What is number system? A system from which we can use to write the different numbers, different mathematical equations, and everything in mathematics. That all consists of number system. It is used, digits are there, symbols are there. You need different symbols, right? You use equal to, plus, minus, all these you use in mathematics. These symbols, digits like digits like 0, 1, 2, and so on, and even negative numbers, right? So these all are under the number system of mathematics. What it helps us to give unique representation to every number. Every number is unique in its own way, right? So what does number system provide us with that representation, so that हर नंबर एक अलग होता है, तो उसको अलग तरीके से लिखने के लिए वो सिस्टम चाहिए होगा. वही सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम है. अरिथमेटिक, जिसमें हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते हैं, ये सब किसके अंडर आता है? अरिथमेटिक के अंडर. ओके, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द फिगर्स, उस सब के अंदर क्या होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब हमारे क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस है. ओके, सो ये तो थे नंबर्स के बारे में. व्हाट अबाउट न्यूमरल्स? अगर हम कोई भी ग्रुप ऑफ फिगर्स को यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स. यू माइट हैव स्टडीड द न्यूमरल फॉर्म इन योर प्रीवियस or junior classes, right? In which we used to be like, if it is 49, it will be, we'll be writing 49 in its numeral form. Have you studied it? Yes, ma'am. You have studied the numeral form, right? So from here, where we start from its unit place, tens place, hundreds, and if a number is like 1, 2, 3, 4, it is the whole numeral. So it will be its ones place, tens place, hundreds place, and thousands place, right? So this is the numeral for which we'll be writing it 1234. Where are we using 1000? From its this position, these positions are giving us this number, right? So what is numeral? A group of figures denoting a number. Okay, understood everybody? What comes in our number system? Everything we use in our daily life in mathematics is under our number system. Okay, shall we move further? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, we have started. There are different types. Okay, different types of numbers are there in our number system. Yes. So what are these? We'll study about all these type of numbers today. Natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, real numbers, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, and co-prime numbers. Okay. So what are these? These are the different types of numbers which are present under the number system. We will be using these numbers to form different situations in mathematics. Okay. So let's study about them one by one. So first are the natural numbers. What are natural numbers? Counting from 1, 2, 3, 4 up to infinity. Up to infinity, these are natural numbers. These are also called counting numbers. Where do we start counting? We start counting from 1. Whenever you are told to do counting in your
starting classes like first, second, then what we are given with, we are told to start counting from 1 onwards. So these counting numbers are only the natural numbers. There's a very basic and minute differences between these types of numbers. Okay, 1, 2, 3, 4 up to infinity, positive numbers are all natural numbers. But if we include 0 with them, these are same numbers like natural numbers. 1, 2, 3, 4. Natural numbers are these. But if we are including 0, it will become whole number. When 0 is included in a set of natural numbers, it becomes a set of whole numbers. Okay? Understood, everybody? Ma'am, can you explain this again? Yes, ma'am. Whole number and natural number. Yes, sure. Natural numbers are the counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, and all other positive numbers starting from 1 are covered under the natural numbers. But if we are also including 0 with these numbers, then this set from 0 onwards, it will become whole numbers. Now you understood? There's Yes, just a 0 difference. The difference of this 0 between natural numbers and whole numbers. Okay, understood the difference? Yes, ma'am. Okay, next. Yes, ma'am. Next is are our integers. Integer, including, first we studied natural numbers, right? Natural numbers were there. Then we added 0 to it. It became a whole number. Okay. And if we will be adding whole numbers, what were whole numbers? Whole numbers were 0, 1, 2, 3 and all. Right? 0 to infinity. Yes, 0 to infinity were the whole numbers. But if we will add the negative numbers also, negative numbers to whole numbers, what it will become? That will minus Integers. Minus infinity to -2, -1, 0, 1, 2 up to infinity. Okay. So it will be, these all will come under, all these set will come under the integers. Okay. Got the difference? Yes, ma'am. Okay. Next, here I've typed the question. What about 0? 1 to infinity are positive. Yes? 1, Yes, ma'am. infinity are positive numbers. Right? -1, sorry, minus infinity to 1 are negative numbers. Yes? So what about 0? What will 0 come under? Ma'am, it will neither be positive nor be negative. Yes, 0 will never consider 0 either a positive number, neither a negative number. Okay? Our next type is rational numbers. So, rational numbers are the numbers which can be written in the form P by Q. P by Q फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं वो सब हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर्स. अब इन सब में कौन से नंबर्स भी आ जाएंगे? सिर्फ एक कंडीशन क्या है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, सो तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, इट शुड नॉट इक्वल बी 0. -2/3, it is in the form P by Q. 6/7 is also in the form P by Q and Q is not equal to 0 in both the cases.
तो क्या माइनस के 5 इज इट ऑल्सो रैशनल नंबर? Yes, ma'am. It is a rational number because Vansh Rathi, are you there? Yes, ma'am. So is 5 minus 5 a rational number? Yes, ma'am. No, ma'am. It is not a rational number. No, ma'am. Okay. Haryana is saying yes. ma'am, it is a rational number because it can be expressed in the form of P by Q, and Q is in the form of 1. Yes. So we can, Vansh Rathi, we can write it as minus 5 by 1. It will be in the form P by Q, and Q is also not equal to 0. Both the conditions of rational numbers are satisfied, right? So all the integers are rational numbers. I'll write it on a whiteboard. Okay, I'll write it here only. All integers are rational numbers. So, Vansh Rathi, what were integers? I just told about integers before rational numbers. What were integers? Shivraj Rajpurohit. Yes, miss. What are integers? Ma'am, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, all the negative numbers, 0, and all the positive numbers. All these are integers. Vansh Rathi, please pay attention. Okay. All these are integers. So, rational numbers you understood? What comes under rational numbers are the whole numbers 0, 3, 1. Root 4 is equal to 2. You know that? So it is also a rational number. Yes, ma'am. And we can also write it down as root 4 by 1. Okay. These are all positive numbers. Integers में क्या था? Negative numbers भी थे. Whole numbers के साथ negative numbers थे. तो वो बन गए integers. Right? And rational numbers में क्या है? फिर ये P by Q form वाले numbers भी आ जाएंगे हमारे सारे. Okay. So, writing about. Can you explain rational number again? Rational numbers? Number again. Yes, sure. Ma'am, can you explain again? Yes, sure. Rational numbers are all the numbers which we can write down in the form of P by Q form. This P by Q form, and other option is the Q in the P by Q form should not be 0. Okay. So about this, Q not equal to 0, all the whole numbers, that is the positive numbers, plus 0 plus negative numbers. Okay. And all these P by Q form, that is any fractional numbers you can say. All the fractional number, all these types of numbers comes under rational numbers. Understood everybody now? Okay. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And all other numbers except these, all these numbers, there are also some numbers which cannot be expressed in the form of P by Q. Till now, the type of numbers which we have studied, सबको हम P by Q form में लिख सकते थे, right?
लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे Yes, ma'am. होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. वो सब क्या है हमारे irrational numbers. This comes under root 3. Root 4 we knew that it is 2, right? Root 4 we knew about, root 4 was 2. So we could write it in the form p by q. But we know root 3, it is non-terminating. Similarly about pi values 3.14 we use in our daily routine mathematics, but it goes on, it's also non-terminating, so we cannot write these numbers in the form p by q. Root 3, root 7, these numbers are irrational numbers. Understood everybody? Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. Shivraj Raj Purohit, Vansh Rathi, and other students? No, ma'am. Any doubts there? No, No, ma'am. ma'am. Okay, so let's move further. So next are our real numbers. What are real numbers? Real number is a whole number that can be found on the number line. So what is number line? This line with two arrows you can see. This line is a number line in which we have 0 to this arrows. What these arrows shows that it can be extended in both directions. Okay. So from 0, 1, 2, 3, and when it will be extended, it will be like 4, 5, and this side -4 and -5, and to be continued on both sides, right? So what these will come under, all these 1 to infinity were natural numbers. 0 was including 0 was whole number, and including negative were integers, and including these fractional parts, right? When you look at the scale, these are like these small divisions are there between 1, 2, 3, 4 on a scale. Anyone observed this? There are small Yes, divisions ma'am. on the scale when you see them. Okay, what are these small divisions? They will be 9 to 10 small divisions. So these will be like 0, in between 0 to 1, they will be 0.1, 0.2, like this up to 1, 0.9 and 1. These are like this. So how will you write 0.1? It is always 1 by 10. So these are the fractional numbers. So here in between it will be 1 by 2, or 0.5 will be in between. You know, root 2, what is root 2? It is 1.414. So it will be approx 1.4. Approx 1.4 it is. So it will be in just, this is the middle. So it will be 1 point before the middle. So all these numbers, we can locate these numbers on the number line. So what are real numbers? Real numbers are all the numbers till now we have studied: natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. All these 5 types of numbers are covered under the real numbers. When you talk about real numbers, it can be any of these type of numbers. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई Yes, डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No.
Shraddhi, you have a doubt, you can ask. No, ma'am. Okay. So next are our even numbers. You all know what are even numbers? The numbers which are divided by, which can be divided by 2. Okay. So 0, we also include 0 in the even numbers because 0 can be divided by any number, right? So examples, all 2, 4, 6, 8, all these numbers are even numbers. Okay. And what are odd numbers? We studied like 0 we included in even numbers, and then 2, 4, 6, -2, -4, -6, all these numbers we covered under even numbers. Then also half numbers are left. फिर भी आधे बच गए, बचे या नहीं बचे? मैम बच्चे हैं। बचे हैं ना आधे? कौन से बचे वो? 1, 2, 3, -1, सॉरी 1, 3, 5, 7, 2 और नंबर, तो कौन से बचे? 1, 3, 5 up to infinity, and इधर -1, -2, sorry -3, -5 up to infinity. तो ये कौन से नंबर्स हैं? ये सब हैं हमारे ऑड नंबर्स. तो अब तक जितने हमने रियल नंबर्स पढ़े उन सबको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. क्या किया? जो 2 से डिवाइड होते हैं आधे नंबर, वो हमने इवन नंबर्स में रख दिए, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन सबको हमने किस में? ऑड नंबर्स में रख दिया. समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. एक चीज और, अब आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1. अब ऐसे भी नंबर्स हैं कुछ जिनको ना वो 2 से डिवाइड होंगे ना वो इवन, मतलब इवन और ऑड नंबर्स में से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके अगर हम फैक्टर्स बनाएं, ये देखें कि वो किस किस के टेबल पर आते हैं. फैक्टर्स बनाने का मतलब है कि उनको चेक करना कि वो किस किस के टेबल पर आते हैं. वो अगर सिर्फ अपने टेबल पर और 1 के टेबल पे आते हैं तो हम उन सबको क्या बोलते हैं? वो क्या है? प्राइम नंबर्स. ओके. इसके एग्जांपल which have exactly 2 distinct factors. 2 distinct factors. वो 2 distinct factors कौन से होंगे? एक 1, एक तो होगा 1 और एक नंबर itself. ओके, समझ आई? तो 1 और 4, क्या 1 और 4 प्राइम नंबर्स हैं? फर्स्टली टेल मी अबाउट 1. मैम इट ओनली हैव मैम 1 on itself. Yes, ma'am. मैम 1 में है प्राइम नंबर लेकिन 4 नहीं है. ओके, नेक्स्ट. और किसी का? वन भी प्राइम नंबर नहीं है. हमारा कंडीशन क्या थी? एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स. 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सिर्फ 1 ही तो होता है. दूसरा फैक्टर कहाँ है? अगर हम नंबर itself लें वो भी 1 ही है, वो तो दोनों सेम ही फैक्टर हुआ है. तो 1 प्राइम नंबर हुआ? No, ma'am. नहीं हुआ. 1 is also not a prime number. And what about 4? 4 have factors 1, 2 and 4. तो इसकी तो कंडीशन ही खत्म हो गई. क्या कैसे खत्म हो गई? कि हमें तो सिर्फ 2 फैक्टर्स चाहिए थे, लेकिन हमारे पास फैक्टर्स कितने आ गए? 3. कंडीशन ही खत्म, कंडीशन वायलेटेड. सो ये भी प्राइम नंबर नहीं है. ओके. So next is composite numbers. What are composite numbers? All the natural numbers which have all the natural numbers. Who will tell me what are natural numbers? Ma'am, it
is counting number 1, 2, 3, 4 till infinity. One numbers which I started from 1 to in 1 Yes. to infinity. Yes, 1 to infinity. All the positive numbers except 0 are natural numbers. So what are composite numbers? So only we will take only positive numbers under this composite numbers. Okay. There's these little Excuse me, differences. ma'am. Yes. Ma'am, will you send this class recording on classroom? Yes, I will share it. Okay. मैम वो प्राइम नंबर वाला पेज फिर से निकालोगे एक बार प्लीज? Yes, please. Here. ओके मैम, थैंक यू. Okay. सभी नेचुरल नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. अब 4 के हमारे कितने फैक्टर्स हुए थे? 3 फैक्टर्स थे, 1, 2 एंड 4, राइट? ऐसे ही 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4 एंड 8. तो इन सबके क्या है? 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स है और कोई और नंबर्स भी फैक्टर्स हैं. तो इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स. ओके. तो हमने क्या किया? जिनके तो 2 फैक्टर्स हैं उनको हमने प्राइम नंबर्स दिया. 2 कौन से? 2 भी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. ओके. जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिनके ऑफ कोर्स सी बात है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. अब एक तो एक अपने आप हो गया, 1 हो गया, और दूसरा नंबर खुद हो गया. तो जब उससे ज्यादा फैक्टर्स आएंगे तो कोई डिफरेंट नंबर्स भी आएंगे उनमें. तो उन सब नंबर्स को हमने किस में डाला? कंपोजिट नंबर्स. ओके. योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हु इज स्पीकिंग? Anyone has a doubt now? No, ma'am. Okay. Next No, is next are co-prime numbers. Co-prime numbers हमारे वो होते हैं जिनके आपस में 2 नंबर्स होंगे, जैसे 4 और 9. अगर हम 4 के फैक्टर्स देखें तो 1, 2 एंड 4 होते हैं. अगर हम 9 के फैक्टर्स देखें तो 1, 3 और 9 होते हैं. तो इन दोनों में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन है? नहीं है ना? नो मैम. No, ma'am. ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर मतलब जैसे अगर हम 16 लें तो 4 और लेट अस टेक 32. 4, 8 होता है फैक्टर्स, इसके 4 और 8 भी हैं, है ना? और ऐसे ही हमारा अगर हम 16 लें तो 8 और 2 होता है. तो इसमें तो 8 कॉमन आ गया जी. लेकिन तो ये दोनों आपस में क्या को प्राइम होंगे? 1 तो है ही सब में. तो क्या ये दोनों आपस में को प्राइम होंगे? नहीं, क्योंकि हमें क्या बोला है कि कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए. ओके. लेकिन 8 तो क्या है? हमारा प्राइम नंबर है. इज 8 अ प्राइम नंबर? No, ma'am. It is a no, ma'am. composite number. इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर. तो हमें व्हाट वी आर टोल्ड इज सिर्फ कौन से, इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन प्राइम फैक्टर. सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन थी हमारी. इनमें से सिर्फ 1, और हम उनको क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ उनमें 1 कॉमन आ सकता है. ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ 1 कॉमन होगा उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स. ओके. तो इस चीज को हम यूज कहाँ पे करते हैं? को प्राइम नंबर्स को हम यूज कहाँ करते हैं? को प्राइम नंबर्स को हम यूज करते हैं, बताएगा कोई? Ma'am, for finding the HCF. नो. को प्राइम नंबर्स को हम यूज करते हैं
जो हमारे बड़े नंबर्स हैं उनकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। ओके ओके, टेल मी, if a number is divisible by 4 and 10, will it be divisible by 40 also? Let us take an example about 60. 60 is divisible by 4 and 60 is also divisible by 10, right? So लेकिन क्या 60 को हम 40 से डिवाइड कर सकते हैं? No, ma'am. नो ना। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 4 and 10 आर नॉट प्राइम नंबर्स। अगर 4 और 10 भी प्राइम नंबर्स होते तो ऐसा हो जाता। अभी मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। तो अगर ये प्राइम नंबर्स होते तो लेकिन ये कंपोजिट नंबर्स है 4 और 10, तो इसीलिए ये ऐसा नहीं होता। ओके नेक्स्ट, अगर एक नंबर 8 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, तो क्या वो 88 से भी डिविजिबल होगा? Let us take 176 as an example. It is divisible by 8. 8 to the 16 and 8 to the 16. Yes. And it is also divisible by 11. 11 1s are 11 and 11 6 are 16. 6. Right? तो अगर हम चेक करें क्या 176 हमारा 88 से भी डिविजिबल है? 88 टू सा क्या होता है? 176. 176. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमारा जो 8 है और 11 है वो दोनों प्राइम नंबर्स है। बिकॉज 8 and 11 are prime numbers. ओके तो इसीलिए हम बोलते हैं, अगर हमको वैसे बोला जाता कि बताओ 176 88 से डिविजिबल है, तो हमने क्या किया, 88 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। वो क्या हुआ, 8 और 11, 8 into 11, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। और 8 क्या होता है हमारा, 2 into 2 into 2 into 11, राइट? तो ये हमने इसकी क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। तो हमने इसको इन छोटे नंबर से चेक कर लिया। इट्स नॉट जस्ट प्राइम, इट इज अबाउट को प्राइम, बिकॉज 8 and 11 आर को प्राइम नंबर्स, कि दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Ma'am, I have a doubt. Yes, ma'am. यस प्लीज। Ma'am, but 8 is a composite number. 8 is a composite number, that is what I am saying, because ये दोनों जो नंबर्स हैं 8 और 11, ये दोनों आपस में प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स कौन से थे कि उन दोनों में फैक्टर सिर्फ सिंगल 1 कॉमन होगा। लेकिन अगर हम 4 और 10 का केस देखें, 4 and 10, what is 4? 1 2 and 4. What is 10? 1 2 and 5. So 2 is also common, they are not co-prime, and in Okay, this ma'am. they are co-prime. Yes, you have a doubt for us, man? मैम ये सारी रिकॉर्डिंग जो भी हो रही है ये गूगल क्लासरूम में आएगी ना? ओके, मैं भेज दूंगी, मैम से बात करके मैं भेज दूंगी उसको। ओके, तो अब क्या करते हैं, को प्राइम फैक्टर्स नंबर्स को किस लिए चेक करते हैं, लार्जर नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। बिकॉज इट इज इजी फॉर अस टू चेक, वी चेक फॉर 176, अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमें 88 का टेबल आना चाहिए, है ना? अगर 88 से हमें चेक करना है कि 176 88 के टेबल पे आता है या नहीं, तो हमें 88 का टेबल आना चाहिए। लेकिन इतने टेबल्स तो हम लोग याद नहीं करते हैं, राइट?
तो हम लोग इसने क्या किया, इसको छोटे फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। 8 और 11, हमें 8 का टेबल भी आता है, 11 का टेबल भी आता है, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं आपस में। तो हमने क्या किया, 176 को चेक कर लिया कि 8 पे आता है, 11 पे आता है, तो 88 पे भी आएगा, डिविजिबल बाय 88। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।